Hello students, we will see today's class. I'm Professor Samita Shinde. I'm going to welcome you all once again. We will see today point number 3 of shares are issued to employees. Here we are going to study SARS option. Now what is the meaning of a SARS? SARS means Stock Appreciation Rights Scheme. In this scheme, what is happened? Company gives appreciation to their employees in the form of ownership. This is a simple meaning of SARS. Now, what is given in your textbook? In textbook, they are given under this scheme, the employees are given a right to receive appreciation in the value of a specified number of shares of the company at a future date. यानी आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको फ्यूचर डेट यानी फ्यूचर में जो डेट आएगी डिसाइडेड डेट जो की है तो वो डेट में उनको क्या मिल जाते हैं एज ए एप्रिसिएशन दिस वैल्यू ऑफ अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ शेयर्स. The company allots, point number 2 is, the company allots specified number of stock appreciation rights units that are linked to the value of a company shares on the date of allotment. जब कंपनी उनको शेयर्स अलॉट करती है तो इनके ये जो शेयर्स हैं that are the specified number of shares and the stock appreciation right unit that are linked to the value of shares ऑफ द कंपनी. यानी कंपनी के शेयर्स हैं वहाँ से वो क्या होते हैं उनके शेयर्स लिंक हो जाते हैं ऑन द रिलीवेंट डेट दैट इज अ फ्यूचर डेट. यानी ये सब कब होता है फ्यूचर डेट में डिपेंडिंग अपॉन द एप्रिसिएशन इन द वैल्यू ऑफ शेयर्स विच आर लिंक टू द SAR यूनिट्स. The employees is paid the appreciation value in cash or through the equity shares. अब ये एप्रिसिएशन उनको कैसे दिया जाता है एक तो उनको फ्यूचर डेट में दिया जाता है एंड नाउ यू कैन सी द शेयर्स वैल्यूज आर गोइंग टू चेंज अकॉर्डिंग टू द डिमांड एंड सप्लाई इन द मार्केट ऑफ शेयर्स. द सेम यू आर गोइंग टू स्टडी इन इकोनॉमिक्स. तो वैसे ही हमारे शेयर्स के वैल्यू बढ़ते हैं तो वो बढ़ी हुई वैल्यू ये आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं तो उनको कैश में दिया जाता है या दे कैन बी गिवन एज अ इक्विटी शेयर्स. Point number 3 is SARS is a form of a bonus compensation. Now हम सब लोगों को पता है कि जब बोनस कब मिलता है एम्प्लॉयज़ को when they are going to work hard and not is from the salary. The salaries are different and bonus part is different. Bonus is an extra amount you are getting as a reward for your work. Yes, the SARS is a form of a bonus compensation given to the employees if the company performs well and its market price of a shares goes up. Now, why everyone wants to purchase the shares? Yes, because they want to earn a profit. And this, if the company is going to perform very well, the market price of shares goes up. That means your employees are getting good appreciation, whatever they are going to offer by the company as appreciation shares. Yes, so I hope everyone is going to clear with point number 3. Now we are going to see next slide. Here there are not any specific point is given as a provision, but you can read all this it is a part of your SARS. The employee does not have to pay for buying any shares. यानी यहाँ पे आपके कंपनी के एम्प्लॉयज़ को कुछ भी अमाउंट पे नहीं करना है. जैसे प्रीवियस वाले पॉइंट में देखा था कि कंपनी क्या करती है शेयर्स की वैल्यू उनके सैलरी में से डिडक्ट करती है. यहाँ पे आपको पैसे पे नहीं करने एज ए एम्प्लॉई. कंपनी हैज़ टू गिव एम्प्लॉयज़ अ वेस्टिंग पीरियड ऑफ अ मिनिमम 1 ईयर टू एक्सरसाइज दिस ऑप्शन. हर कोई ऑप्शन में कंपनी कितने साल का पीरियड देती है 1 ईयर का. दैट इज योर वेस्टिंग पीरियड. Okay, that is a period where you can purchase your shares. There is no lock-in period for a SARS. SARS में लॉकिंग पीरियड ऐसे कंसेप्ट नहीं होता. The shares are not given as a lock-in period. Yes. The two issue SARS, the company has to get approval of shareholders through special resolution. Yes, this point is a repeated point which already we have seen in the last 2 points. So to issue SARS option, the company has to get approval from whom? From the shareholders. And for what they have to do? They have to pass a special resolution. This is clear. Now I'll move to your SWAT equity shares.
Now what is in the sweat equity shares? Simple. The sweat equity share is the last form of your offering shares to their employees. Now here are the only few points are given. So what is given as a few points? These are the shares issued by a company to its directors or employees at discount or for consideration other than the cash. अभी यहाँ पे आपको समझ के लेना है some difficult words. The shares are issued to company to its share directors and employees. Yes, यहाँ पे भी कंपनी क्या करती है उनके शेयर्स ऑफर करती है किसको directors and their employees. At what rate? At the discounted rate which already we have studied and learned as well. Now or for the consideration other than cash. अभी यहाँ पे आपको एक मीनिंग है consideration का मीनिंग. अभी consideration means what? You have to pay some amount to purchase anything. Yes. For example, if you want to purchase a pen, so what you are going to do? पेन ऐसे ही कोई दे देता है क्या शॉपकीपर? No, you have to give them consideration. Consideration means you are getting something in return. Yes, तो यहाँ these are the some lawful words. ये सब languages law में use होता है. तो consideration means what? You have to get something in return. तो आपको यहाँ पे क्या मिलता है? Other than the cash, you have to get something. यहाँ पे समझ में आया? Now, it is issued in recognition of their valuable contribution to the company which has resulted in increase in profit. Yes, sweat equity shares are offered. Why? It is offered because it is a recognition for their employees. Employees सालों साल आपके कंपनी के लिए hard work, sincerity, punctuality, discipline, all this ये सब follow करके they are going to do their best. And this is a result, ये आपको एक साल में नहीं मिलता. तो एम्प्लॉयज सालों साल जब काम करते हैं तब उनको ऐसे ऑफर्स दिए जाते हैं कंपनी की तरफ से. तो यहाँ पे इट इज़ अ रिकग्निशन टू रिमेंबर देयर वर्क, दे आर वर्किंग वेरी हार्ड. तो ये वर्किंग हार्ड करते हैं तो कंपनी को क्या होता है? दे आर गेटिंग डे बाय डे प्रॉफिट. यस, तो यहाँ पे उनका कंट्रीब्यूशन जो होता है दे आर गोइंग टू इंक्रीज इन द नंबर ऑफ अ प्रॉफिट. तो उसके रिटर्न में आपको क्या मिल जाता है? एज अ स्वेट इक्विटी शेयर्स. नाउ स्वेट इक्विटी शेयर्स रैंक pari passu with other equity share. अभी pari passu means what? Equal footing, that is will be treated at a par with other equity shares. अभी ये शेयर्स को कैसे ट्रीट किया जाता है? The shares can be issued at a par, वो वैल्यू से ट्रीट किया जाता है. यस, तो कैसे इसका मार्केट प्राइस नहीं डिसाइड किया जाता. यहाँ पे आपको जब शेयर्स इश्यू होते हैं तो डिस्काउंट प्राइस में होते हैं और वो कौन सी वैल्यू डिसाइड करते हैं? पार वैल्यू. पार वैल्यू आपको ऑलरेडी सिखाया है. पार वैल्यू मीन्स द शेयर्स कैन बी पार इशूड एट अ पार वैल्यू मीन्स शेयर्स का मार्केट प्राइस और उसका फेस वैल्यू इट शुड बी द सेम. क्लियर? These shares have a lock-in period of 3 years. That is, they cannot transfer during this period. यहाँ पे अभी आपको लॉकिंग पीरियड का कंसेप्ट समझ में आया कि these shares can be offered for the 3 years. हाँ, there is a 3 years locking period. उसके बीच में 3 years में आप कुछ भी नहीं कर सकते. After 3 years, you can transfer your share, you can sell your shares, and you can do whatever you want. Company has to get approval of the shareholder through special resolution to issue sweat equity shares. Yes, sweat equity shares issue करना है तो आपको क्या चाहिए? Shareholders का approval by passing the special resolution. Par passu means equal footing that will be treated at the par with other equity shares. So this is the simple meaning of a sweat equity shares. यहाँ तक सबको समझ में आया है? Okay. Now we will move to last part of this methods of issuing of shares. We already studied and in every part I mention you diagram.
because this is a very theoretical and which is contain lot of technical and provisions part. So here I'm not going to put any kind of picture over there because that may distract you. So here I keep as a simple कि आपको क्या क्या याद रखना है वो मैं आपको बताती हूँ अभी कि आपको डिस्काउंटेड प्राइस, फ्यूचर डेट, स्पेशल रिजोल्यूशन, वो कहाँ पे पास करना है, मीटिंग में पास करना है, यू हैव टू टेक अ अप्रूवल, देयर इज अ मिनिमम वेस्टिंग पीरियड दैट इज अ 1 year, लास्ट वाला जो है स्वेट इक्विटी उसमें 3 years का. Done. Basic part related with this is done. Now you have to add up the meaning and all. Your short notes can be done with this. Yes, I'll now move to your next part, that is your private placement. Yes, you will see the diagram. Now you all know we in first part we have done A, then B and C, and we are going to move to now D part. So what is a A? Public offer. What is a B? Exist offering shares to their existing equity shareholders. Third, offering shares to their employees or the existing employee, permanent employee. And last part is a private placement. Now this private placement is divided into two types. One is a right issue and second one is your preferential preferential allotment. See, preferential allotment. यहाँ तक क्लियर हुआ? तो हमने देखा है कि right issue is already we are studied in where here, that is a public offer. Public offer में हमने देखा है क्या? देखा है public offer में? No. We have already seen this right issue in the offering shares to the existing equity shareholders. So, to make you clear, you have to see the earlier video for the right issue. So, in this video, I'm not going to cover your right issue part because this is the same part which already we have done in the shares are offered to the existing equity shareholders. Now, private placement. So, what is a private placement? When a company offers its securities to select a group of a person not exceeding 200, it is called a private placement. Now, what do you mean by private placement? The company offers their share to the particular group. और ये ग्रुप कितने लोगों का होना चाहिए? ज़्यादा से ज़्यादा 200 लोगों. उससे ज़्यादा लोगों को they are not going to offer any shares. So this is called as a private placement. In other words, the company offers its securities only to the identified person and not to the general public. यानी कंपनी ही क्या करती है उनके शेयर्स जनरल पब्लिक को यानी हाँ ले लो शेयर्स ले लो ऐसे नहीं करते. कंपनी क्या करती है पर्टिकुलर ग्रुप फाइंड आउट करती है और वही लोगों को क्या करती है they are going to offer their shares. The board of directors select or identify the persons to be included in the group. बोर्ड डिसाइड करता है, डायरेक्टर्स डिसाइड करते हैं कि किसको लेना है किसको नहीं लेना. They can be mutual funds, institutional investors, etc. That group may be mutual funds. और म्यूचुअल फंड पता है आपको क्या होता है? आपके पेरेंट्स इन्वेस्ट करते होंगे तो आपको म्यूचुअल फंड कंसेप्ट पता होगा कि ये शेयर्स से कम रिस्की इन्वेस्टमेंट होता है. नेक्स्ट इज इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर. आपके बैंक्स होते हैं, आपके मनी लेंडर्स होते हैं जो ऑथराइज्ड है, तो इनको सब लोगों को इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कहते हैं. The company has to issue private placement offer letter along with the application. तो कंपनी क्या करती है? प्राइवेट प्लेसमेंट कैसे ऑफर करती है? बाय इशूइंग अ लेटर along with the application. एप्लीकेशन के साथ उनका क्या होता है? प्राइवेट प्लेसमेंट का ऑफर लेटर भी मिलता है. The shares are offered can be fully or partly paid up and the consideration should be paid by check, डिमांड ड्राफ्ट बट नॉट बाय कैश. यहाँ पे क्या करते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट में? द शेयर्स कैन बी ऑफर्ड टू
fully or the partly paid up shares, the consideration यानी in return जो पैसे लेने हैं वो कैसे लेते हैं, either by check or DD, or they are not going to accept any kind of cash. So this is your private placement. यहाँ तक clear हुआ? Now the company can make private placement in two ways. So what are that two ways? One is your right issue. Second is your preferential allotment. This is already you are having basic idea. So related with the right issue, I want to say you have to refer the earlier videos. So where I covered right issue part. Yes, the right issue I'm not going to cover over here. I'm going to start directly with the preferential allotment. So what is a preferential allotment? When a company issues specified securities, that is equity shares or the securities that can be converted into equity shares in future to select a group of persons on a preferential basis. It is called as a preferential allotment. जो कंपनी होती है उनकी कुछ स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज होते हैं यानी उनके शेयर्स जो होते हैं, तो ये शेयर्स क्या करते हैं, दे कैन बी इजीली कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स इन फ्यूचर डेट एंड टू whom they are going to offer to the selected group of persons on the preferential यानी उनको प्रायोरिटी वाइज उनको दिया जाता है. It is called as a preferential allotment. Usually the company offer preferential allotment to promoters, existing shareholders, employees, etc. तो यहाँ पे कंपनी क्या करती है, उनके शेयर्स वो सिलेक्टेड ग्रुप कौन सा होता है, मे बी देयर इज अ प्रमोटर, मे बी देयर इज अ employees, maybe they are existing shareholders. So this group can be decided by the board. They share the share offered are the fully paid up and the applicants have to pay the consideration in cash. यहाँ पे क्या होता है कि उनको जो रिटर्न वैल्यू देना होता है कंपनी को, so they are going to pay it in a cash. And यहाँ पे the shares are going to offer only for the fully paid up share. फुल्ली पेड है उसके ही शेयर्स उनको मिलते हैं. The shares are issued under the preferential allotment have no voting rights. ये शेयर्स जो परचेस करते हैं तो उनको कौन सा बेसिक राइट नहीं होता, वोटिंग इन द मीटिंग. सो दे आर नॉट हैविंग एनी वोटिंग राइट. यस, यहाँ तक क्लियर हुआ सबको कि वी आर गोइंग टू एंड अप विद द मेथड्स ऑफ इशूइंग शेयर्स. नाउ वी विल सी the approval from the special resolution is needed to make the preferential allotment. As usual, we are going to study earlier that you need a special resolution passing in from the your meeting, and while you are making the preferential allotment, you must have to take the permission of your share. Sorry, you have to pass the special resolution. Companies usually go for preferential allotment as it is not only less time consuming but also involves a less paperwork and formalities. Now the data is available with the company. If suppose company is going to select their group of people is employees, तो employees का data होता है कंपनी के पास, तो यहाँ पे पेपर वर्क कम होगा, फॉर्मेलिटीज कम होंगे. So this kind of work can the paperwork, consideration, all these things जो है values, वो सब वो क्या मीन्स उनके पास से सब डेटा कलेक्ट करना है, डॉक्यूमेंटेशन करना है, तो ये पार्ट सब अवॉइड होते जाता है. इसकी वजह से क्या होता है, कंपनी इज गोइंग टू सेव देयर टाइम. यहाँ तक क्लियर हुआ. नाउ आई वांट टू एक्सप्लेन यू वन मोर थिंग. ये आपको प्राइवेट प्लेसमेंट में है कि राइट इशू है और प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट है. Now in your textbook they are given some additional information. So just we are going to have a look. Only there is a 3 point and after this 3 point I'm going to wind up my this methods of issue. Now the private placement and the preferential allotment. The securities are offered in private placement. What is happening in the security in private placement? The securities are offered to the group of person not exceeding 200. सिक्योरिटीज किसको मिलता है, दे वांट अ ग्रुप, बट ये ग्रुप कितना ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 200 से ज़्यादा. सिलेक्टेड सिक्योरिटीज दैट इज इक्विटी शेयर ऑफ द शेयर्स दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर इज offered to select a group of a person
on a preferential basis. यानी उनके जो सिक्योरिटीज हैं वो securities on the shares. They can be converted into equity shares and is offered to their selected group on the preferential basis. This is a simple terminology given with the private and preferential allotment. Now, in private placement, the shares are offered through private placement can be fully paid or the partly paid up. यहाँ पे क्या चलता है आपका fully और partly paid up. But while you are going to allot preferential allotment, on that time your share must be fully paid up. And last point for the day, private placement offer letter is issued when the shares are offered. तो यहाँ पे प्राइवेट प्लेसमेंट क्या करता है उनका ऑफर लेटर भी एप्लीकेशन के साथ देता है और यहाँ पे इन प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट देयर इज नो सच डॉक्यूमेंट इज अटैच over here with. Yes, so this is your session related with the methods of issuing shares to the private placement and earlier part to the क्या है हमने देखा है earlier part में shares are offered to their employees. So this is wind up with the methods part. Yes, is it clear to everyone? Thank you for listening patiently. Do well, study well, work hard, and please have a watch on the videos.